Yes, so students, we are going to start our topic straight lines. As of now, we were only doing the basics 2D geometry needed for JEE Advanced. देखिए बच्चों, जब हम लोग स्लोप के बारे में बात करते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट होता क्या है? अपन ये समझते हैं कि स्लोप एम किसको कहा जाता है? टैन थीटा को। ठीक है, टैन थीटा बोले तो स्लोप या फिर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे सवाल है कि ये थीटा क्या है भाई, है ना? ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और अपन ने ये एंगल मेजर किया है, वो एंगल जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, उस एंगल को क्या कहा जाता है? इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका अपने को अगर स्लोप मेजर करना है, स्लोप मेजर करना है, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इंक्लिनेशन, यानी कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, उसको अपन थीटा कहते हैं। एंड दिस टैन थीटा इज कॉल्ड एज द स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, ये सब बात सब लोगों को पता है। बट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर थीटा लाइज। सो थीटा लाइज फ्रॉम -π टू π। इंक्लिनेशन हमेशा -π से π के बीच ही लाई करेगा। ओके, चलिए यहाँ इसके बाद अपन एक और बात पे आते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन अपने पास है, देखिए अपन ने दो स्ट्रेट लाइन ले लिया और m1 m2 उनके स्लोप्स हैं। अब सबको पता है कि यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, एक फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। This is the formula used to find out the angle between two lines of slopes m1 and m2। ठीक है, आती है बात समझ में सबको? तो अगर अपने पास स्लोप्स इस तरीके से है, क्वेश्चन इज when not use this formula, राइट? तो चलिए आप लोग सब बताएंगे when we should not use the formula of finding out angle between two straight lines. Under what condition we cannot use? Can we use this formula every time? No, we cannot use this formula every time to find the angle between two lines. We cannot use this formula when the lines are, listen carefully, when the lines are perpendicular as well as they are parallel to coordinate axis. Suppose you have got one line which is parallel to x axis, another line which is parallel to y axis. One is parallel to x axis, another is parallel to y axis. And if that time you are using this formula to find out the angle between the lines, you will not get the answer, right? So this formula is avoided when lines are parallel to coordinate axis. Apart from this, every time you can use this formula to find the angle between two lines। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात अपनी स्लोप के बारे में। इंटरसेप्ट आप सबको पता है, फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, बट ये सब चलिए बहुत बेसिक हो जाता है ना।
These are all basic things. What is more important from our examination, for our advanced examination, that is two forms. First becomes parametric form, right? Parametric form of a line, it is very important. When you will see your advanced question papers, you will find questions mostly from this type. They will not ask you the question from intercept form or any other form, right? So it becomes very important. So we will know about it, what it is and when to use it. We will see that also by some problem, right? So see, first of all we understand what is this parametric. See, if A is any given point x1 comma y1 on any line, on this line, and this line slope is tan theta, that is inclination is theta. If slope is tan theta, inclination is theta, and there is a point on this line, we want to find out the coordinates of two other points P and Q, which are at the distance of r units from A. Then how to find? Then the coordinates are given as x1 plus minus r cos theta and y1 plus minus r sin theta. You take plus plus, you will get any of the coordinate of P and Q. You take minus minus, you will get the other. Right? This is the parametric form. Whenever we have to find some point which is at the distance of r unit from the given point and line, inclination is also given, we always refer to this formula, parametric formula. Clear to all? Right. Now let's see some questions based on this. See, this is the question. Question on parametric form. A point is given 2, 3. Here is the point 2, 3. And one line is there which is making angle of 45 degree with the x-axis. Inclination is 45 degree. And this line is meeting one another line x plus y plus 1 equal to 0 at the point P. So when it is meeting this line x plus y plus 1 equal to 0 at P, then what will be this distance AP? So you can see inclination is given, they are asking about distance. So from here itself you will get the idea in your mind that somewhere we have to use parametric form of the straight line. So this AP we are assuming as R, right? Inclination is theta. Theta is 45 degree. X1 plus R cos theta. Y1 plus R sin theta.
we have taken this r unit, so x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. You can take minus also, but this point will be that side, so we are taking plus. This must lie on this line, so this one must be satisfied on this. Satisfy 5 plus 2r by root 2 plus 1 equal to 0. Solve r from here, that is your answer. So this way you will solve the problems of JEE Advanced on this parametric form of straight lines. ठीक है, क्लियर टू ऑल? सबको बात समझ में आती है? चलिए, जब बात समझ में आती है तो आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।